नहीं, तो एक मैंने एक हफ्ते पुरानी बात तो मैं बता ही नहीं सकता किसी को। ना मुझे याद रहता है, ना मैं याद रखना चाहता हूँ। Excuse me, sir. हम्म। Sir, can you explain the difference between average velocity and instantaneous velocity? एक मिनट, नाउ यू ट्राई, क्या बच्चा बोल रहा है भाई ये? कौन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है? एक किसी ने पूछा। बाकी सब कहाँ चले गए ये? ख्याति, Sir? यू फेस प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? No, sir, I joined with the link. No, sir, I just joined with the link. यू हैव टू बी अ बिट लाउडर। Sir, I joined with the link. यू ज्वाइन विद द लिंक Sir, ओनली it ना? is asking the passcode, sir. We don't know what's the passcode, but it आई just came. आई हैव शेयर्ड द पासकोड। Yes, sir, that's why I was able to join. हाँ। Sir, I was not asked the passcode when I wanted to join. तुमको कोई पूछ सकता है, बताओ? तुम इतना क्वेश्चन पूछोगे उससे पागल हो जाएगा वो। कहेगा हे देवी तुम जाओ, तुमको किसने रोका है? अच्छा भाई देखो, तो आई कांट टाइप, तो यू हैव टू बियर विथ माई हैंड राइटिंग, वॉट एवर इट इज, ठीक है? सो टुडे वी लर्न अबाउट। हाँ, ये क्या बोला था इसने? अनवी ने, अनवी क्या चाहिए था बेटा? Sir, can you explain the difference between average velocity and instantaneous एवरेज का मतलब velocity? होता है, एवरेज का मतलब द ड्यूरेशन विल बी लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है दैट चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। बस। Okay, sir. ठीक है। Sir, हाँ sir, in homework, objective 1 third question and objective 2 second question are based on equations of motion. हाँ। So I don't know equations of motion. सो डोंट डू इट, ठीक है? Sir, Sir, हम्म। sir, in the homework you gave in objective one, question number 3, I used the equation of motion, but still I was unable to solve the question. So, can you explain it? एक सेकंड रुको जरा, ये बाकी जनता कहाँ है, पहले इनको देखा जाए, रुको। फिर से बोलो बेटा, क्या पूछ रही हो तुम? Sir, I have doubt in objective one, question number 3. There I used the equation of motion, but still I was unable to solve it. कोई बात नहीं, अभी उसको छोड़ देंगे अपन। पढ़ेंगे जब अपन, अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन, देन वी विल डू इट, ओके? Okay, sir. बाकी बच्चे लोग कहाँ रह गए भाई? ये तो अभी आ रहे थे लोग सारे। विहान, धीरेन। गिव मी 2 मिनट्स, ये पूछूं मैं ना इनसे, कहाँ है ये? तो वेलोसिटी में तुम पूछ रही हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या था, है ना?
So average velocity is the change in displacement, change in position vector upon change in time. So this duration will be large. ठीक है Anvi? Yes, So sir. final position minus initial position upon delta t, or this is displacement upon time, change in displacement upon time. ठीक है Anvi? और Yes. change in displacement नहीं है, सिर्फ displacement होगा. Final minus initial will be displacement. Instantaneous में क्या होता है बेटा? Instantaneous में it is limit delta t tends to 0. So the time duration becomes very, very small. And this is dr vector upon dt. Got it? Yes, sir. विहान, प्रॉब्लम क्या आ रही थी बेटा ज्वाइन करने में? सर मुझे अभी मैसेज आया कि पासकोड क्या था, दैट्स व्हाई. अभी क्या हो, तो बहुत देर पहले डाल दिया था मैंने. यस सर, बट कुछ मुझे अभी पता चला, लाइक आई ठीक है. गॉट द. Now acceleration is also the same, जैसा you have done about velocity and this. Acceleration is given as rate of change of velocity. This is rate of change of velocity. ठीक है. तो average acceleration is given as, there are two different types of accelerations. Average acceleration is given as final velocity, change in velocity upon change in time. Right? So this is final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. Right? See, similar to what we have done in average velocity, right? Then there is this instantaneous acceleration. This is given as dv vector by dt. How do we get this? It's limit delta t tends to 0, delta v upon delta t. So this is instantaneous acceleration. समझ आ रहा है बेटा सबको? हाँ ना बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Like बहुत simple example देता हूँ. It's a very simple example. A particle is moving in a circular path. Okay. With a constant speed. Speed का मतलब distance upon time is always same. ठीक है? So this is the particle which is moving in the circle. So at some instant the particle was at this location. ठीक है? And after 2 seconds the particle was at this location. ठीक? The speed of the particle is 2 meters per second. So this position is at t is equal to 0. This position is at t is equal to 2 seconds. Can you guys find what is the average acceleration in this case between t0 and t2? Between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. निकालेंगे आप लोग इसको? हेलो. The formula is written in the slide. You know how to write vectors. So think accordingly. Do it quickly. This is your x-axis and this is your y-axis. लिखिए, करिए सॉल्व इसको जल्दी से. ख्याति और विहान, कितने लोग? Yes, दो sir. लोगों ने तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा है ना बेटा? नो सर, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट हमने नहीं किया है.
हाँ, डॉट तक कर लिया ना तुम लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, तो फिर अभी इफ यू वांट टू रिपीट व्हाट यू हैव डन इन वेक्टर्स, ख्याति एंड विहान। Mm, No, sir. no, sir. We can revise. मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मतलब अगर बुलाऊं तो नहीं, नहीं जरूरत है ना उसकी, जो कर लिया उसकी। Not really, sir. ओके, ख्याति? Yes, sir. No. हाँ, No, sir. ठीक है। हाँ भाई, वेरी गुड अनवी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना बेटा क्या होगा अनवी। ईशा, हुआ बेटा? डन? प्रणव, जगन्नाथ, नीलाभ, बन रहा है बेटा? हाँ सर, कर Sir, रहा I हूँ। didn't hear the question, sir. Power went out. सॉरी, Sir, I didn't hear the question. My power went out. the question is the particle was at t is equal to 0 at this location and t is equal to 2 seconds at this location. ठीक है? The speed of the particle is 2 meters per second on this circle. Find the sir. average acceleration. Okay. ठीक है? Do it. अरे मैंने, चलो अभी अभी देखता हूं मैं, परसों, day after tomorrow I'll check how many of you have taken the test. All of you have to complete your test, okay, before next week. वेक्टर्स के, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का दो, सॉरी अरे कैलकुलस का टेस्ट नेक्स्ट वीक से पहले लिख लेना, नेक्स्ट वीक वेंसडे से पहले, ठीक है? हेलो Yes. नीलाभ, Yes. टेस्ट नहीं लिखा है ना? नीलाभ, टेस्ट नहीं लिखा है ना बेटा कैलकुलस का? नो सर, कब लिखेगा बेटा? बोला था ना तूने लिखेगा तू इस वीक में। एग्जाम मेरे पास आ रही है, मैं तो नहीं कॉलेज नहीं, में। पास तो देखो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, एग्जाम पास दूर से कोई मतलब ही नहीं है अब। ये तो बहुत पहले लिख लेना था तुमको, अभी तक नहीं लिखा है तुमने। सॉरी सर। नहीं सॉरी, अरे भाई टेस्ट लिखना है बस, ठीक है? सर कल मैं कर लूंगा। वेंसडे तक टेस्ट लिख के खत्म करो। ऑल ऑफ यू हैव टू टेक कैलकुलस का टेस्ट, ओके? I gave you enough time to do it. So how to do this question? What is final velocity? Final velocity is 2 minus I cap, right? What is initial velocity? Initial velocity is 2j cap. So what is average acceleration? Average acceleration is 2 minus I cap minus 2 minus j cap, change in velocity upon time. Sorry, not minus j cap, this is plus j cap. So now this is minus I cap minus j cap. What about magnitude? Root 2. What about angle, direction? 1. So this lies in the third quadrant. So phi is the angle, direction of the average acceleration is 225 degrees. I hope all of you understood this. Yes or no? Sir, यस सर। Yes. sir, can you share the recording for the previous class? प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तुमको? हाँ करेंगे, भेज देंगे आपको, ठीक है? Okay, sir. This is acceleration. Sir, can you tell how A average is equal to root 2? देखो अब ना मेरा इसके बाद क्या होता है, मुझे आता है गुस्सा। क्यों आता है गुस्सा? छोटा छोटा बच्चा तुम लोग सब, तुमको इतना बार वेक्टर सिखाए हैं,
ये बताइए हे देवी, माइनस आई कैप माइनस जे कैप का तुम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकती हो ईशा, कृषा, नथानी? हाँ सर। फिर क्या होता है बताओ? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ना, -1 स्क्वायर प्लस हाँ -1 स्क्वायर का रूट। अब तुम बताओ, ये पूछने का कोई बात है? आफ्टर नहीं डूइंग सर। एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस इन वेक्टर्स, नाउ यू आर आस्किंग मी हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? एंड सर, जबरदस्ती। सॉरी सर। फिर Sir, and in tan phi, I got minus because I did plus 2/2. क्यों 2/2 करेगी? इसका कोएफिशिएंट क्या है? दिस इज -1 आई कैप प्लस -1 जे कैप. So x coefficient is -1, y coefficient is -1. So -1 upon -1, which is 1. So phi is what? 225 degrees. Because Oh, this vector lies in third quadrant. Simple है. मतलब तुमको जबरदस्ती टाइम बर्बाद करना है क्या? सर एक सेकंड स्लाइड दिखाओ। ना, कुछ नहीं मिलेगा अभी. अब तुम ऐसे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा. जबरदस्ती जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था. चलो, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट ग्राफ्स. अच्छा, एक और चीज याद रखो. What is average acceleration? If you go with the graph, so slope of the secant, I hope you remember what is secant, drawn to the VT graph, is A average. ठीक है? और ये क्या है? This is, please make notes इसका. हाँ, slope of the tangent. I will show you. अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको. Of the tangent drawn to the VT graph. ठीक है? तो ये tangent का स्लोप, ये secant का स्लोप. Please note it. Adya, how are you? Why are you late today, Adya? My father got the message, but my father did not say that today class is at 8. I thought it is at 8:15. We started at 8:20. I don't know, sir. I didn't send the I message that the class is at 8. Did I send the message that class is at 8? no sir. I don't know, sir. My father said. Oh, कोई बात नहीं. चलो, noted all of you? Noted the two Sir? statements? No, sir. Sir, हाँ? did you explain the homework questions? No? Okay, sir. धीरेन, समझ आ रहा है बेटा? धीरेन रेड्डी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. कौन पूछा? आन्या ने पूछा. वे व्हाट चैप्टर इज दिस? हे भगवान, हे जगन्नाथ. Sir, I was absent for the last 2 classes. That's why I asked. लास्ट 2 नहीं बेटा, तुम लास्ट 3 क्लासेस से एब्सेंट हो. फिर क्यों हो एब्सेंट ये तुम ही जानती हो. पता नहीं क्या होता है. Sir, पिछले 2 classes I was not well and उसके एक तो पहले बताओगी ना? नहीं बताना है. ठीक है, अभी अभी एक ही क्लास हुई है. ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक की. कुछ बात ज्यादा नहीं निकला है. ठीक है? तो काइनेमैटिक्स नाम है इस चैप्टर का. Okay, sir. ठीक. चलो, सो दिस वाज अबाउट एक्सेलरेशन. ये लिखा तुम लोगों ने ना? आ जाओ. सो वंस वी नो अबाउट पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, velocity, average velocity, instantaneous velocity, acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration, it's time that we learn about graphs.
Sir, हाँ, can I take a screenshot of the previous slide? तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से? सर मैं नोट्स ही बना रहा हूँ. क्या बस नाम हो है गया. तुम्हारा? हो गया सर. तो graphs. Always remember that the graphs are drawn for one-dimensional motion only. ठीक है? Graphs are drawn for one-dimension motion only. Always remember this. तुमको मालूम है बच्चे लोग 12th पास कर लेते हैं and they are not aware that graphs in kinematics are for one-dimension motion. तो इसलिए प्लीज इसको आप लोग याद रखिए कि ग्राफ्स आर ड्रॉन ओनली फॉर वन डायमेंशन मोशन। और मैं तुम्हें आज कह रहा हूं, कृषा हमारी पूछेगी देखो 2 क्लास बाद पक्का, सर ग्राफ वन डायमेंशन के लिए होता है क्या? पक्का पूछेगी, देखना है लड़की। सर बट एक्स एंड वाई है तो वो 2 डायमेंशन नहीं हो गया। अभी ग्राफ किसके किसके बीच में तुम्हें पता भी है कुछ? नहीं सर। करीमुल्ला की कहानी सुनाया था कि नहीं तुमको? मैं सुनाया हूं? मेरे को नहीं पता सर। नहीं सुनाया करीमुल्ला की कहानी? अच्छा ठीक है, फिर कभी सुनाएंगे। चलो, so graphs are drawn only for one dimensional motion. So the first graph which we are discussing today is position time graph. Position time graph. ठीक है? We call this as XT graph also. This is the first graph which we are interested in. This is XT graph. ठीक है? अब ये जो XT ग्राफ है ये क्या होता है देखो ध्यान से। So now all of you please pay attention. On one axis, on x, along x-axis, it will be time which we will plot. So time is an independent variable here. Which variable is independent? Time Time. independent, right? And x, the position of the particle is dependent variable. Understood all of you? Isha, Vihan Verma, Manogna, Pranav, sir. Yes, Vijay. sir. देखो भाई, this is a very important chapter, one of the most important chapter in physics. So please learn it properly, okay? And it will have, you will use it in 9th standard also. This will be Sir? taught in school. हाँ बोलो बोलो नीलाभ, क्या हुआ? टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए क्या? क्यों होना क्योंकि चाहिए बेटा? टाइम का वैल्यू चेंज करोगे तो एक्स बदलेगा ना। यस अगर सर, एक्स की वैल्यू लिखी मैंने t³ तो आई एम चेंजिंग टाइम, देन ओनली एक्स विल चेंज ना। पहले कौन चेंज होगा इसमें? सर यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो x represents the position of the particle and t represents the time of the particle. Okay, all of you please pay attention. Now let's draw the graph here. Let this be the graph. ठीक है? This is some graph x as a function of time. This is some graph x as a function of time. Now let's talk about these two instances. This is time t1, this is time t2, this is x1, this is x2. ठीक, this is time t1, this is time t2, this is time x1, sorry, position x1, this is position x2. Now, अबे लिखो नहीं इधर, हेलो 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 हेलो,
कौन लिख रहा है? खबरदार जो स्क्रीन से आंख हटी किसी की तो बताओ मैं तुम लोग को फिर अभी। डोंट राइट, आई गिव यू टाइम टू राइट. So now, if I draw the secant to this graph, right? Can you guys see this? This is the secant, right? A line which cuts the curve at least at two different points, right? This Yes, is sir. the secant. Yes, sir. तो ये secant है ना, तो secant का slope क्या हो जाएगा देखो. Complete this triangle. So the angle which the secant makes with x-axis is, let's say, phi, right? This is what? This is delta x. This is what? This is delta t. Now tan phi is equal to delta x upon delta t. This is change in position, yes or no, all of you? Yes. Yes. Yes, sir. Yeah. Change in position upon change in time, Indian time. right? What is it giving us? Average acceleration. No, not acceleration. This is average Velocity. velocity का magnitude है ये. Sorry, average velocity, not magnitude, average velocity, right? So slope of the secant. So what is average velocity now? From xt graph, we come to know about distance travel. क्योंकि जब position पता है तो distance भी पता होगा. और displacement and or displacement. Distance मिलेगा, displacement मिलेगा. ठीक है? This तो we will get. What about velocities? So we will get average velocity as the slope of the secant. The slope of the secant. This is average velocity. What about instantaneous velocity? It is, क्या करोगे? मान लेते हैं कि ये यहां बनाना है मुझे instantaneous velocity इस पॉइंट पे. तो ये क्या हो गया? The slope of the tangent drawn to the curve. Let's say this is theta. So V instantaneous is given as slope of the tangent. ठीक है? Sir, Drawn to the xt graph. sir, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है. So what do we get from an xt graph? We get distance, displacement, average velocity, instantaneous velocity. हाँ बोलो. sir, so average velocity is taken for a period of time and instantaneous velocity is taken of a point on the graph. तुम पहली बार पढ़ रही हो क्या? इतनी बार तुमको ग्राफ बताया है मैंने. त्रिशा सॉरी बेटा. स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस ही हुआ ना, एक टाइम इंस्टेंट. देखो डेल्टा टी 0 हुआ कि नहीं हुआ त्रिशा? Yes, sir. पक्का ना? अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे निकालना है यहाँ पे एट पॉइंट t इज इक्वल टू t1, तो क्या करेंगे बेटा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, isn't it? Yes, sir. This is dx by dt. So this is the slope of the tangent. Yes or no? Yes, sir. So that's how we write it. ठीक है? Now, अच्छा. now if this is positive, अगर वेक्टर लगाते हो तो if this is positive, then velocity, the object is moving along positive x-axis because we are drawing it for one dimension motion. If it comes out to be negative, then the particle is moving along negative x-axis. I hope all of you understood this. हाँ नीला बोलो. सर मुझे डाउट है, वो ग्रीन कलर का जो आपने सेकंड ड्रॉ किया है ना, तो उसमें आपने वो ट्रायंगल क्यों कंप्लीट किया? वैसे ही स्लोप क्यों नहीं निकाला? कैसे निकाल लेते स्लोप? वो ट्रायंगल से ही तो स्लोप निकला ना. tan phi किया तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आया और राइट एंगल ट्रायंगल में.
बट सर हमें 2 पॉइंट्स ग्राफ पे पड़े तो हम सीधा वो स्लोप वैसे स्लोप नहीं निकाल सकते, y2 - y1। और क्या किया वहां पे? x2 - x1 इज डेल्टा x, t2 - t1 इज डेल्टा t। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ और समझा क्या कर समझा। रहे हैं भाई? यस सर, समझा समझा। एंड सर हाँ। पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा क्या? नहीं, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है? नहीं होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। तो फिर स्कूल में वो डिस्प्लेसमेंट हाँ, टाइम ग्राफ। वो क्या करते हैं वो लोग, इनिशियल पोजीशन को ले लेते हैं 0 और फिर बनाते हैं वो ग्राफ। तो जो तुम पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हो वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उनके। ठीक है, पर यस सर। टेक्निकली इट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। यस सर। भाई, तुम डेल्टा एक्स निकाला तो तुमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी किया, चेंज इन पोजीशन यस। करते हो ना। हाँ हाँ। समझ आया नहीं आया? नीलाभ। यस सर समझा। हाँ, नोट करो इसको सब लोग, ऑल ऑफ यू नोट इट क्विकली। आई विल बी बैक इन अ मिनट।
मेरे प्यारे बच्चों, लिख लिया तुम लोगों ने ये? Yes, sir. सबने लिख लिया? ऑल ऑफ यू नोटेड? आद्या, यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Yes, sir. हाँ, you noted or not? Noted. Last point, sir. So let's last. You're still writing. Yes, sir. Please write quickly. देखो, if you would not have done calculus, you would have never understood what is slope, what is instantaneous velocity from the perspective of a graph, right? So that is why calculus, trigonometry, vectors, all are important. Done, sir. माशाल्लाह. कौन है ये माशाअल्लाह बोल रहा है? Sir, I'm saying that because we have learned trigonometry. So, sir, trigonometry is Allah. माशाअल्लाह. और कोई शब्द नहीं मिला बेटा तुमको हिंदी का? Nice. है? चलो, अच्छा हुआ तूने अल्लाह अकबर नहीं बोला है, नहीं तो ये लोग सब गायब हो जाते हैं यहाँ से अभी. यस कुछ दिन पहले आई वॉज वॉचिंग, स्क्रोल कर रहा था मैं, तो आई मीम केम इन फ्रंट ऑफ मी. उसमें एक आदमी जो है, ही वॉज ट्राइंग टू move the people from that place. He was saying ki move from this section to this section, this section to this section. He told them multiple times, but they didn't move, they didn't budge. So he said Allahu Akbar. सब भागने लगे वहां से. तो खैर एनीवेज, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है. So let's do one example based on this. All of you will solve this position time graph now. ठीक है, this question you have to solve. I will not solve. देखो रे बच्चों सब लोग ध्यान से. So the position time graph of a particle is given like this. The particle moves along this line with time, then the position became constant and then it started decreasing. ठीक है? सर वो तो ग्राफ के बाहर जा रहा है, कौन? वो लाइन. तुझे बड़ा दिख रहा है ग्राफ के बाहर जाता हुआ? ये देख. हाँ सर. नेगेटिव एक्सिस के और जा रहा है. मतलब ओ, कुछ भी बोलती सॉरी है लड़की, सॉरी. दिमाग गिरा के बैठती हो तुम क्लास में मेरी क्या है? जैसे पैर पोछ के आते हैं ना बाहर अंदर डोर मैट पे, वैसे दिमाग छोड़ के आती हो बाहर, टांग के बाहर कमरे के. नहीं सर. हैं? छोटे बच्चे सावधान, इधर देखो सब लोग. This is 10 meters, sorry, 10 meters. All of you please pay attention. This is 10 meters. This is minus 10 meters. ठीक है? This is time in seconds. Please pay attention, all of you. You have to solve it. I am not going to solve it. This is position in meters. Okay? And these are the respective time instants in the graph. ठीक है बेटा? So now this is let's say 2 seconds. This is 4 seconds. नहीं 4 नहीं 6 seconds. This is 7. This is 8 seconds. ठीक है? I'm writing it here. Find, इसको टाइप करना पड़ेगा. Find the first distance traveled by the particle, distance traveled and displacement. Distance traveled and displacement between
t is equal to 2 to t is equal to 8 seconds. ठीक है? Yeah, this is the first question which you have to solve. Second, find the, all of you have to solve it and post your answers in the comment window, right? Find the average velocity between t is equal to 0 to t is equal to 6 seconds and t is equal to 3 to 8 seconds. ठीक है? 3 is not given. है? 3 is not given. हाँ तो नहीं देंगे, उसमें क्या है? सवाल कौन पूछ रहा है, मैं कि तू? Sir, मतलब in graph where we will assume 3 as. वाह वाह, तुम जहां मानो वहां एज्यूम करो। देखो तुमको, मैं देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है, सच में टांग के आई हो बाहर की नहीं? नहीं 2 और 6 के बीच में ही होएगा, लेकिन ऐसा एकदम बीच में कि थोड़ा उधर थोड़ा इधर। तुम यार मत पूछो यार, अभी यार तुम कुछ भी पूछती हो फिर अभी। इधर आ जाओ, थर्ड वाला देखो बच्चों, जल्दी से फटाफट समझो, इधर आओ आप लोग। नाउ इट इज मिस्टर जगन्नाथ, यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग? जगन्नाथ, धीरेन रेड्डी, धीरेन आया है कि नहीं क्लास में? धीरेन, योर माइक इज नॉट वर्किंग। Manogna, Pranav, you understood what we are doing? Yes, sir. Okay. Find the instantaneous. All of you start solving the question. Velocity at t is equal to 1 second, 4 seconds, and 7 seconds. चलो, I am giving you 3 minutes to solve this question. 3 नहीं, ले लो चलो 5 minutes. Take 5 minutes to solve this question. Vihan Verma, Jagannath, Dhiren, why your cameras are switched off? मैं बता रहा हूँ, I'll put all of you in the waiting room if you will not switch on your camera. Sorry, sir, didn't realize. और फिर मुझसे बोलते रहना तुम लोग कि सर सॉरी 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 सॉरी, मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारी बात। Sir, we should write the direction for displacement and average. थोड़ा जोर से बेटा, be a bit louder please. Sir, we should write direction also. Obviously you will get direction, na? As I have said that the particle is moving along one dimension only, right? So if the velocity comes out to be positive, it is moving along positive x-axis. If the velocity comes to be negative, it is moving along negative x-axis. Simple. है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, लिखो जल्दी से, निकालो फटाफट। हिरेन, I have not disabled your camera and mic. क्या हो गया बेटा? मैंने तो नहीं किया disable. I can't do it also.
जाकिर भाई ने तबाही मचा दी। जस्ट सोचो, एक इंडियन स्टैंडर्ड कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन को फ्री में सोल्ड आउट करा। सिर्फ टैलेंट ही एक मेगा बिजनेस पूरी नहीं है ऐसा। एक शो शेयर का एक की रात में 2.6 करोड़ से 4.4 करोड़ की कमाई बस टिकट से हो। अभी सुनो ध्यान से, जाकिर भाई का नॉर्थ अमेरिका टूर मतलब 46 करोड़ से 76 करोड़। Sir, हाँ बोल भाई बोल। sir, I done. So should I send you answer in WhatsApp because this chat No. में it is not happening. अरे भाई चैट में तुम लोग को इतने दिन में आंसर लिखना नहीं आया। दोज ऑफ यू आर डूइंग, जस्ट टेल दिस गाइस हाउ टू सेंड प्राइवेट चैट में मैसेज। तुम मेरे नाम के आगे जाओ, वहां पे एरो आएगा, उसमें तुमको भेजना है मैसेज। समझ आया? जैसे अभी नीलाप के साथ, Oh, मतलब तुम लोग ये सब छोटा छोटा कैसा, तुम लोग कौन सा जेन जी जेन अल्फा क्या हो गया तुम लोग? अल्फा बीटा गामा हो गया तुम लोग सब है? जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दिमाग तुम लोग का और कहाँ जा रहा है? All of Sir, it's actually Gen Alpha. बताओ। no, sir, I am Gen Z only. अच्छा ठीक है ठीक है, तो तू काम कर ले बस, इधर आ जाओ। Send me. What is the distance traveled? See, as I said, I'll do the first one for you. All of you, please pay attention. As I said, the particle moves in a straight line. मैंने बोला ना? So, at time t0, देखो, all of you pay attention. At time t0, the particle was at location x is equal to 0. Now, when the particle was at t is equal to, then it started moving with a constant velocity. Why constant velocity? Because
slope of this line, see, slope of this line is constant. Yes or no? It's a straight line. Say yes or no, all of you. Yes. Yes. Sir. Yes, sir. If you take instantaneous velocity at any point on this graph between 0 to 2, I repeat, if you take instantaneous velocity between 0 to 2 at any point on this graph, if you draw the slope, if you draw the tangent, it will coincide with this line only. Yes or no? Yes, sir. The tangent to a straight line coincides with the straight line only, right? So what is the slope? The slope remains constant between 0 to 2. So let's say this is phi 1. So what is tan phi 1? Tan phi 1 is velocity of the particle between 0 to 2 seconds. So tan phi 1 is how much? 10 upon 2. 5. Is in meters and 2 is in seconds. So it is 5 meters per second. ठीक है? So see, you solved this first question. T is equal to 1 second. Mein. What is instantaneous velocity? Can you guys see? What is instantaneous velocity? 5 meter per meters 5 meters per per second. second. Now at 4 seconds, chalo आओ 4 seconds पे देखते हैं. This is the point at 4 seconds, right? Now if you draw the graph at this point, if you draw the tangent at this point, all of you understood or not? Pranav, Yes. Understood, sir. Ishan, Abhikya, Understood, sir. Yes, Anya, Manogna, Vihan, Understood, sir. Pranav, Khyati. Yes, sir. Okay. So now this green tangent, right? Khyati, tell me what is the slope of this line? What is the angle which this green line makes with x-axis, Khyati? Sir, 0. Yeah, phi 2 is 0. So for 4 seconds, it's tan phi 2, which is 0 meters per second. 0. Got it? Yes, Now sir. at 7 seconds, let's do this. इसको complete कर लेते हैं at 7 seconds. So identify the point on the graph at 7 seconds. Krishana Thani, इधर ध्यान दो. Yes. 7 seconds पे आपने point plot किया, right? Now what we do is we will draw the graph again. So sorry, tangent. So this is the tangent, the yellow tangent for this line. Yes or no, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now the angle here is this angle. Positive x-axis से anti-clockwise. This is angle is phi 3. Right? So at 7 seconds, the instantaneous velocity is tan of phi 3. I hope all of you understood this till this point. Nilab, समझ आया बेटा ये? हाँ समझा सर. तो अब मुझे बताओ नीलाभ, tan phi 3 निकाल सकते हैं क्या? Can we find tan phi 3 from here? tan phi हाँ हम निकाल सकते. कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बताओ कैसे निकलेगा? 10/7. कैसे निकलेगा 10/7? ये तो एंगल ही इधर, तो ये तो ट्रायंगल में इंक्लूडेड ही नहीं है किसी. There is no triangle associated. See, all of you pay attention. There is no triangle associated with this phi 3. So what do we do is, we take this angle. Can we take this angle? Yes. This angle is pi minus phi 3. Pi stands for 180 degrees. Remember? Sir. Yes. Yes. And this is the triangle which we are interested in now. Got it? All of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो भाई देखो, फिर से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं. इसको प्लीज try to understand this. This is the triangle which we are interested in. ठीक है. So can I find tan pi minus pi? All of you, do you know pi minus pi 3? Tan pi minus pi 3 is, in this triangle it is 10 upon 1. 10 meters upon 1 second. Khyati, you understood or not? Yes, sir. Isha, you understood? Isha, Yeah, sir. this is 10 upon 1. This distance is 10, this distance is 1, so it's 10 upon 1.
So it is 10 meters per second, but this is tan pi minus pi 3. Now, if you guys remember, we have done this tan 180 degrees minus pi by 3 minus pi 3 is minus tan pi 3. Yes or no? Yes, sir. ये याद Yes. आया है मैंने तुमको ये. This is an odd even multiple. When even multiple, the reference angle is even multiple, tan remains tan. Because sine remains sine, cos remains cos. Yes, sir. This is minus tan phi 3. So phi 3 is, so this is, sorry, we wanted to find tan phi 3. It is minus 10 meters per second. So this indicates that the particle between 6 to 8 seconds, the particle is moving backwards. So यहाँ पे if you plot the graph here at t is equal to 2 seconds, देखो इसको straight line में कैसे plot करेंगे? It is 10 meters, right? Now it is constant. एक second. So at t is equal to 2, नहीं, यहाँ बना लो इसको. At t is equal to 2 seconds, it was at 10 meters. After that, till 6 seconds, 2 to 6 seconds, it is at 10 meters only. Now, after 6 seconds, what it does is, it is moving in the negative x-axis. It started moving along this direction. It became 0. देखो, at t is equal to 7 seconds, the particle was here again, right? 0 पे था. और फिर 8 second में it went for minus 10. Got it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट ना, मैं इसको तुम लोग के लिए अलग से ड्रॉ कर देता हूं. But this is how you find the slope of the tangent and do these type of questions. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes. Kathy, Yes. Aditya, Ishan, Yes, Prasad. sir. Yes, sir. Sir, ये देखो. sir, at 7 seconds, I did slope is equal to minus 10 upon 8 minus 6. So I got minus 20 upon 2 is equal to minus 10 meters per second. अरे तुम स्लोप ट्रायंगल का निकालती हो कि ऐसे डमरू का निकालती हो? तुम किसका स्लोप निकालती हो जी? So that अरे तुम ये कोई डायग्राम होता है, इसका स्लोप निकालते हैं? तुम सच में आज दिमाग टांग आई हो क्या बाहर? sir, लेकिन मुझे minus 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है. अरे तुम गलत सलत करोगी तो कुछ भी आएगा तो थोड़ी उसको हम समझते रहेंगे. हमको मुझे क्यों समझना है वो? तुम क्यों ऐसा? स्लोप किसका निकालते हैं बेटा? स्लोप लाइन का निकालना है ट्रायंगल यूज करके. मैंने कब तुम्हें बताया कि ऐसा ट्रायंगल यूज करो, ये डायग्राम यूज करना है? मैंने सिखाया तुमको क्या? जिसने सर सिखाया वो 6 सेकंड से एकदम डायरेक्टली नीचे. अच्छा नहीं, मैंने गलत कुछ किया भी है. बोलती है भाई, चुप रहा कर. अब देखो इधर आ. What is the average velocity between 0 to 6 seconds? तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 6 seconds. देखो बेटा क्या होगा? What is average velocity? Final position minus initial position, right? For this B Yes. part. I am solving this for this B part, right? This were for all the third part, ठीक है? तो I am doing the first one for you. That is between t0 to 6 seconds. Check करो देखो. Average velocity, ठीक है? What is final position at 6 seconds? 10 I cap. 10 meters. What is initial? 0 divided by 6. So this is 5 by 3 I cap meters per second. This is average velocity between 0 to 6. 3 to 8 आप लोग खुद करेंगे. Sir, ये I have done in decimal form. हाँ, बहुत बड़ी. 1.67. Very good. शाबाश. Distance traveled and displacement between 2 to 8 seconds. तो distance traveled क्या है? At 2 seconds it was at 10 meters. At 8 seconds it is at minus 10 meters. So 10 meters से it came to minus 10 meters. So the distance traveled is how much? 20 meters. 20 meters. The length of the path is
20 meters. Displacement is how much? 20 meters. But displacement में you have to write direction. So final position is 10 minus I cap. All of you please pay attention. Initial position is 10 I cap. So displacement is RF minus RI, which is 20 minus I cap. I hope all of you understood this. Yes, sir. Yes. sir. छापो इसको. Sir, can I say answer of 3 to 8 seconds? नहीं. So that is homework. हाँ. Oh, I solved here only. Adya, you understood? Yes, sir. Khyati, Yes, sir. Abhikya, Yes, sir. Ishan, Yes, sir. Isha, Yes, sir. okay, Jagannath, Anvi, Dhiren, Yes, sir. Pranav, Manogna, Yes, sir. आन्या. बेटा मैं तुमको लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, देखना. ये सब आसान है. ये यू हैव ऑलरेडी डन दिस. स्लोप लोप निकालना सीखा था तुमने, है ना? कैलकुलस किया है ना तुमने साथ में? Yes, sir. हाँ, तो उसको तुम क्लास मिस मत करो. और क्लास जब भी मिस कर रही हो तुम बताओ, तो मैं ध्यान रखूंगा भेजने हैं तुमको. ठीक है ना? वैसे तो ग्रुप में पोस्ट हो रहा है, पर लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग शायद नहीं भेजा था मैंने. Okay. Sir, हम्म. sir, the answer of second question, well, average velocity is 4 minus I cap meter by second, right? Which one? The second question, average velocity t is equal to 3 to 8 seconds. I Yes. did it as a homework. Sir, I also got that answer only. चलो, वेरी गुड, शाबाश. -4 meter per second. चलो, तो अब आज का होमवर्क क्या है, सुनो ध्यान से. जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे तुमको एचसी वर्मा में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा में, ठीक है? आई विल जस्ट शो इट टू यू. देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्लीज डोंट मिस द सेशंस. फिजिक्स के क्लासेस एक भी कोई मिस नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं. बेसिक मैथ्स फिर भी दिक्कत नहीं होती थी तुमको, ठीक है ना? इसमें दिक्कत हो जाएगी. तो प्लीज डोंट मिस सेशंस. ये सब वी हैव ऑलरेडी डन. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ाया मैंने. अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव नॉट लर्न नाउ टिल नाउ, है ना? वीटी ग्राफ तो नहीं पढ़ाया ना मैंने तुम्हें आज. ये देखो, इधर आओ. ऑब्जेक्टिव 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नीलाभ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिख रहा है? ये पोजीशन टाइम ही है, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम 0. यस सर. हाँ. क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव 1, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है? उसके बाद क्या करना है तुमको? Sir, हाँ, we have already done this question in the अच्छी बात है. previous नहीं year. किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना है. 9th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2, डू इट. 9th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 करना है. क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज, सॉरी 1 बोल रहा हूँ. एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू डू इट. क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12. This is what you have to do before next session. Okay? So only 3 sums. 2 ऑब्जेक्टिव 1 2 से भी दिए ना मैंने. कौन से? अब मुझे नहीं पता. सर एक बार बोलना प्लीज. नहीं, मेरे को नहीं पता. सर लास्ट क्लास का होमवर्क भी मेरा मिस हो गया था. हाँ, तो मैं क्या करूं? प्लीज. मुझे भी नहीं याद रहता है. ढूंढना पोजीशन टाइम ग्राफ, जहां जहां होगा वो सब करना ऑब्जेक्टिव 1 2 में. ठीक है? विहान, Yes, sir. दोनों विहान. तो तुम लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो. किसने होमवर्क नहीं भेजा अभी, इस बार बताओ जरा मुझे. सर Sir, मैंने भेजा था. सर आई डिड नॉट. Sir, I've done the questions. I can send them right now. तो why you are not sending before the class? Sir, I had to go for a football match. That's why. So what?
क्लास भेजना है बेटा वो. ईशान, you also have not sent the homework of the previous session. I'll send right now. Huh? I'll send right now, sir. Bhai, right now class, I want it before the sessions. Okay, all of you. Please don't deviate from what we have already fixed. Don't deviate it. Excluding the questions on the equations of motion, I Yes, did everything. excluding. हाँ, तो बस send it to me. I Okay, want to sir. check how much you have done. Manogna, Sir? भेजना है बेटा. Adya, Sir, I sent. Yes, sir. sorry. कौन पूछा? Sir, I sent you already, Sir Jagannath. Okay. Sir, what's today's homework? अभी और क्या बताया थोड़ी देर पहले? You are I sleeping? didn't understand. अरे Sir, I'm Adya, sir. हाँ आद्या. Yes, Adya. Exercise this question number 9. I said all these, na? Question number 9, 11, 12 from exercises. Okay, sir. And objective? 1. Objective 1 से second question. Objective 2 से ninth question. ठीक है? करना है. Sir, when Sir? I asked Bye. you, they didn't tell me. Bye.